किसी के जहन में कोई कंसेप्ट के व्हाई चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए हेलिकल पाथ? सर जब वो किसी एंगल पर सब्जेक्टेड किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर। एंड व्हाई इज इट सो? क्यों? व्हाई इट मूव्स इन द हेलिकल पाथ? क्या कहते हैं आप? क्या लगता है बेटा आप? सर उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। That's right, beta. That's right. Okay. Just to make sure. सर ये हेलिकल पार्ट क्या होता है? पाथ. Helical path means that the just like spring, if it is moving in a form of a spring, ठीक है, that is the helical path. A spring is in the helical form. ठीक है, clear हो गया? नहीं समझ में आया? Like here, this is the helical path they have given. In the upper direction, they have given us the helical path, and it is in the horizontal direction they have given us the helical path. ठीक है? So this is the helical path. अच्छा, अब later on जो है मतलब as the बेटा आपका नाम क्या था जिन्होंने अभी बताया कि एन एंगल पे चले यानी आओ बेटा जो भी है ठीक है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। मैं क्योंकि बाय नेम वो गाना चाह रहा था, वो जेन से मैं हम देखा ही नहीं कि कौन बात कर रहा है। जस्ट छोड़ लाना। मेरे ख्याल से 29 रोल नंबर। एनी हाउ बेटा जो भी हैं मतलब एज शी वाज सेइंग के when you have a charge particle moving in the perpendicular field, it will move in the helical path. And why it will move in the helical path? Because it has two components. One is the horizontal component, other one is the perpendicular component. Okay, so let's suppose here in this case ये नहीं, just like here in this case, this is the direction of the magnetic field. Okay, this is the direction of the magnetic field, and let's suppose that you have a charged particle that is moving parallel to it. ठीक है, so क्या होगा? It will move straight or it will get deflected. Sir, can you repeat? Red lines are basically showing us the magnetic field. Blue line is the direction of the charged particle. So what would be the direction of the velocity, or what would be the deflecting force on the charged particle? क्या होगा? Straight जाएगा शायद। Straight move करेगा शायद। Straight, because the angle between as per QVB, so sin 0 हो जाएगा। Sin 0 होगा तो obviously no force, magnetic force will act on a charged particle. It will pass straight by. And on the other end, let's suppose कि आपके पास क्या है कि you have a perpendicular charge particle. So what will happen now? Sin 90 हो जाएगा और 1. Obviously it will move in the circular path because it is the velocity is perpendicular to that of the magnetic field. So in the magnetic field it will move in the circular path. ठीक है? These two things are now clear to you. Now coming toward the next point, let's suppose now the charged particle is moving at some angle. ठीक है? So when it moves in the some angle, it has two components. One is the horizontal component or the parallel component to that of the magnetic field, and second one is the perpendicular component or the component that is perpendicular to the magnetic field. No two things are acting at the same time on the charged particle. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बात up to this point? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? Okay, now this when this charged particle will move in this magnetic field, so what will happen that the parallel component or the horizontal component will allow to move it into the straight path, while the perpendicular component will move it
into the circular path, therefore creating by the helical path. ये चीज समझ में आ गई बेटा कि the horizontal movement is due to the perpendicular horizontal component of the velocity, while the circular motion here is due to the perpendicular component, and both will coexist because charge particle is moving at an angle within the magnetic field, so it is moving the it will have helical path. ये चीज समझ में आ गई? किसी का क्वेश्चन कि शुड आई रिपीट इट? सर प्लीज रिपीट कर देंगे सर हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो क्या कहना था, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से। जी एक सेकंड मैं दोबारा बताता हूँ आपको. What is the relation for the magnetic force? It is equal to QVB sin जो भी है आपके पास थीटा. ठीक है, यही रिलेशन होती है ना. यही रिलेशन ही होती है बेटा. जी सर, जी सर. ठीक ठीक है. अब when will be the force maximum? जब एंगल क्या होगा? इट इज इक्वल टू 90 मींस के व्हेन यू हैव Great. दी, ठीक है, व्हेन यू हैव this perpendicular component of the charge particle, and when it will be zero or minimum, obviously जब Zero. sin zero होगा, so it means that at that time the angle between the velocity and that of the magnetic field is zero. So for the horizontal component, this मैंने आपको बताया था कि this is B here, this is red lines are basically showing the B here, white blue lines are showing the velocity here. ठीक है, so for the horizontal component of the velocity, what would be the force? क्या होगी? Magnetic force Zero. And for the perpendicular component, what would be the force? Maximum. Maximum QVB. So it means K when you have a charge particle which is at some angle, ठीक है, so it has now both components, horizontal component and that of the perpendicular component. So the horizontal components will move it in the forward direction, while the perpendicular component will move it into the circular path. Since both are coexisting, so obviously क्या होगा कि they will move in the helical path, because now they have both x movement and both have circular movement. So this circular movement is due to the perpendicular component and this forward movement is due to the parallel component. Now it is clear to you beta? Any question up to this point? चलें, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये आता है कि when would be the radius of this circle will be larger and when will be smaller? सर एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल पे डिपेंड करता है सर. एंगल पे इक्वल कब होगा? when they have 45 degree. ठीक है, when this angle is toward the horizontal, more toward the horizontal component, there will be lesser radius of this circle, ठीक है, and more forward movement. And when it is toward the 90 angle, then it will be more circular and lesser forward movement. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ये चीज समझ में आ गई? यस सर. चल जी सर जी. चले. So here he is explaining this scenario. ठीक है, so these are the two scenarios here which they have given us. ठीक है, now you can see here that there is more confined circle, lesser radius, and there is a larger radius, and then there is a smaller radius. So two components are V parallel component would be obviously V cos phi, and the perpendicular component would be equal to V sin phi. So this is all the things which they have discussed in this article. The perpendicular components
determines the radius of the helix, which I was telling you that if you have more towards the 90 angle, means that you have larger perpendicular angle, the radius would be larger. And if it is smaller, obviously it is smaller. So perpendicular component basically describes the radius of the circle, while the horizontal distance will be impacted by the parallel component. ठीक हो गया बेटा? चलें. So अब आ जाते हैं हम लोग. ये है आपके पास आर्टिकल, उसने एग्जांपल दिए, एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 22.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट moves into a region of uniform magnetic field of magnitude 4.55. ठीक है. अब उसमें क्या है आपके पास बेटा कि 10⁻⁻⁴ Tesla, the angle between the directions of the B and the electron's velocity is 65.5 degree. What is the pitch of the helical path taken by the electron? अब pitch से क्या मुराद है बेटा? पिच किसे कहते हैं आप? सर टॉप पॉइंट. नहीं, टॉप पॉइंट तो नहीं. ये शेयर होना बंद तो नहीं होगी बेटा? यस सर, बंद होगी. एक सेकंड. पिच बेटा बेसिकली द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, The parallel component determines the pitch of the helix, means के जो आपका फॉरवर्ड डिस्टेंस है वो पिच जो है वो डिफाइन करती है. ठीक है. और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो रेडियस डिफाइन करती है हेलिक्स का. ठीक है. सो अगेन वी कैन कैलकुलेट द पिच. पिच अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, सो पिच इज इक्वल टू VT. हाउ इट इज इक्वल टू VT? इससे क्या मुराद है? VT क्यों लिखा है उन्होंने? यार पिच अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये डिस्टेंस है ना, तो वेलोसिटी और टाइम को बिल्कुल बेटा s इज इक्वल टू VT के बराबर आएगा. तो s की बजाय उन्होंने p लिख दिया तो VT. तो why B parallel component they are taking? Because the horizontal component of the velocity will define the horizontal distance which I was telling you earlier. So we will take the horizontal component of the velocity V parallel into t. So V parallel is equal to V cos phi. T आपके पास क्या है? टाइम पीरियड जो आपके पास आया है, तो 2 pi m over cube B. ठीक है. You will just put the values and you will get the answer which is equal to 9.16 centimeter. Clear हो गया बेटा? अब यस. चले आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है. टाइम भी सर होने जी, वाला है. सर जी की सर एक बार एक्सप्लेन करो. सर ये जो पिच के साथ हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है, ये सर हॉरिजॉन्टली होगा या वर्टिकल भी हो सकता है? नो, you cannot take the vertical component. Horizontal pitch के साथ बेटा here you can see है. एक सेकंड बेटा. सर डिस्टेंस तो वो सर्कुलर मोशन में भी कंप्लीट करेगा. नहीं. Pitch, the parallel component defines the pitch. जो forward distance है, ये देखे ना, जो forward जो ट्रैवल कर रहा है pitch, उसको जी जी सर. ठीक है. परपेंडिकुलर जो है वो सर्कुलर है. ठीक है. अच्छा, अब दोबारा कह रहा था एक्सप्लेन कर दें, तो एक सेकंड बेटा मैं कर देता हूँ. आपने बेसिकली निकालना है कि व्हाट इज द पिच. पिच इज दिस डिस्टेंस. ठीक है. सो यूजिंग द रिलेशन s इज इक्वल टू VT. ठीक है. VT. अब यहाँ पे वी विल टेक द पैरेलल कंपोनेंट. आपका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस वजह से ट्रेवल हो रहा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से या पैरेलल कंपोनेंट की वजह से? पैरेलल कंपोनेंट की वजह से. सो वी विल टेक V पैरेलल इनटू T. ठीक है. तो V पैरेलल इज इक्वल टू V cos phi. एंगल उसने दिया हुआ है बेटा, and then putting the value of the T here, just we will put the values and we will get the answer. Clear हो गया? किसी का क्वेश्चन बेटा अगर दोबारा पूछना चाहे तो you can ask me now. चलो भी असीब, आपका भी क्लियर हो गया? जी सर. चलो, तो आज के लिए बेटा काफी है. अल्हम्दुलिल्लाह सर, काफी है. चलो ठीक है. अब ये है कि जो सेकंड टाइम मतलब प्रीवियसली in the first session there were 62 students and now there are only
54 students. So I will take the attendance of only these students. I will not take the attendance of the other students. ठीक है, kindly let them know. Okay बेटा, फिर आज के लिए काफी है. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, आपसे गपशप होगी. ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. और अल्लाह हाफिज सर, और बेस्ट ऑफ लक हाफिज सर जी. प्रेजेंटेशन के लिए. थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा. ओके जी.